हाय एवरीवन, दिस इज सोनिया हियर फ्रॉम ग्रोइंग क्राफ्ट और आज हम करने वाले हैं स्कल्पचर पेंटिंग। सो ये हमारा आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीडियो है एंड इस वीडियो में ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं एक और रोज विद द बड। दिस इज एन वेरी इजी डीआईवाई ट्यूटोरियल एंड इस वीडियो में मैंने जो यूज़ किया है वो मेरा डीआईवाई स्कल्पचर पेस्ट है। स्कल्पचर पेस्ट कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। So there are two ways of making your sculpture painting. One of my favorite ways is using your different shapes palette knives. Um, हर एक पैलेट नाइफ का एक डिफरेंट यूज होता है. How you use it and how you place it makes a lot of difference. Like in this one I am using just my third number palette knife and इसको स्मूथ करने के लिए I am using my paint brush. So one of the very easy and very DIY technique is आप अपने वाटर ब्रश को डिप कीजिए वाटर में एंड यू जस्ट नीड टू, जहाँ भी आप अपने पेटल्स को ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट ब्रश इट ऑफ विद सम वाटर एंड ट्रस्ट मी आपका जो भी एजेस है वो पूरा स्मूथ हो जाएगा एंड द फ्लावर्स आर गोइंग टू लुक रियली गुड. इफ यू गाइज जस्ट वांट टू चेक आउट हाउ डिड आई क्रिएटेड दिस बड, मैंने हर एक पेटल्स और बड्स के लिए एक डिफरेंट ट्यूटोरियल किया है. यू गाइज कैन इवन चेक आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. एंड लाइक आई सेड हमने पहले भी बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स बनाए हैं विद लेयरिंग and you can use them on different surfaces like on wooden, on MDF, on glass frames. And like here I'm making a beautiful smaller coaster decorative piece. Likewise you can even make your wall frames and trust me, they look absolutely gorgeous. Now, one of the very important thing which I have been asked very regularly is ki whenever I'm using my sculpture paste, whether it's a DIY or the ready-made ones, do I varnish it? Yes, you have to varnish it. You need to apply at least 2 coats of varnish. And after each coat of varnish, you have to make sure that you let it dry completely and then only you move on to the next layer. Now, the third important point is it takes at least 8 to 10 days for your sculpture painting flowers to dry out completely. So do make sure that you give it enough sufficient time to dry out. Don't put it under any fan or anything, just let it dry naturally and trust me, you will not have any breakage, you will not have any cracks at all. So this is one of the easiest way of making your DIY sculpture painting and I really hope you guys enjoyed the tutorial. इस ट्यूटोरियल में मैंने जितने भी सप्लाईज यूज किए हैं वो उनका लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. यू गाइस कैन चेक इट. And if you guys have any tip and tricks on the Russian sculpture painting art, do let me know in the comment section. I'll be more than happy to read that. Thank you so much for watching, guys. Take care and bye bye.